thank you very much for this very important honor that you asked me to speak on a very important subject. So let me just start with a story which we all know, I think, from the Mahabharata. You know the story of Eklavya. I'll just kind of go over that story once more. Now, we know that Eklavya was a person from some kind of a non-Brahmanical tribal background. And he was a very talented archer. And he wanted Guru, great warrior Guru, Dronacharya, to be his teacher. And he goes to Dronacharya at some point in the Mahabharata, in the story, and requests Dronacharya to be his Guru, his teacher. Now we know that this asking to be a teacher is also not simply asking to be a teacher, but also to, in a sense, build a relationship with the Guru. And in the scriptures, in the texts of ancient Indian texts, classical Sanskrit, Hindu texts, Brahmanical texts, in the Brahmana, in fact, we have an idea of something like a riddle, a Guru riddle. So in a sense, when you ask somebody to be your Guru, you're also asking to be put into a relationship with that person, which is a relationship of debt, to be in a relationship of riddle. And if the Guru accepts to put you in that relationship of riddle, that you become a debtor to the Guru, then of course the Guru accepts you. And once the Guru accepts you, there is a whole long apprenticeship. And at the end of that apprenticeship, it is promised that you will also, in a sense, become from merely a student and living a life of a student to someone who is a worthy warrior, a worthy subject, some kind of a adult functioning professional, some kind of professional warrior, archer, whatever. Now we know that Dronacharya doesn't accept Eklavya as his student. And Dronacharya tells him that you are not fit to be my student, not because you don't have that talent, that's not really relevant. You simply don't belong to those people who have the right to become a student. You don't have the right to become a student. So whether you are so-called have merit, talent, possibility of doing what you obviously know, I mean, you have the talent to be a great archer, that's not the point. The point is you have no right to be a great archer, and hence you have no right to be a student, to live the life of a student. And hence, he is denied the Guru riddle. It's a very interesting story because riddle, death, is a relationship of subordination. No, it's a relationship of weakness. If I'm in debt to somebody, then I'm weak in relation to my creditor. The one जो मुझे कुछ देता है और मैं ऋणी होता हूँ, तो ऋण मुझे उसके मुकाबले कमजोर बनाता है। और एकलव्य द्रोणाचार्य के पास जाता है, द्रोणाचार्य के मुकाबले कमजोर बनना चाहता है कि मैं आपके ऋण में रहूं तो मैं आपका शिष्य स्टूडेंट बनूंगा और उससे फिर जाकर बनूंगा जो अर्जुन जैसे बन सकता है। और द्रोणाचार्य उसे वो ऋण का अधिकार नहीं देता, राइट ऑफ बीइंग अ डेटर। ये बड़ा अजीब आइडिया है कि अगर मैं डेट में हूँ तो मैं कमज़ोर हूँ, मैं मेरी राइट का कहीं
I am being deprived of something, and I am being deprived of health, for instance, because I have to pay back. But at the same time, in the story, very clearly we see that what Dronacharya is refusing Eklavya, a tribal boy, is a kind of right to be under debt. So peculiarly, Guru Rin, which only the Brahman apparently, or at least some castes, maybe Kshatriya, maybe not, that's a good question. Only those people have the right to be under debt. And Eklavya doesn't have the right to earn some kind of a debt. In contemporary economic language, we would simply say that for Dronacharya, Eklavya is not credit worthy. उसको हम क्रेडिट नहीं ले सकते क्योंकि वापस नहीं कर सकता क्रेडिट। जो आइडिया बड़ा अजीब है, क्योंकि हम जानते हैं कि एकलव्य उसके बाद जो चीज़ होती है, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, हम जानते हैं। And pardon me for just going over the story again, but I think it's a really very illuminating story. क्या करता है एकलव्य? वो कहता है कि ठीक है, द्रोणाचार्य मुझे नहीं एज अ स्टूडेंट ले रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी मैं द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानूंगा और मैं गुरु मुझे अपना ऋणी नहीं बना रहा है, लेकिन मैं फिर भी गुरु ऋण अदा करूंगा और मैं द्रोणाचार्य का एक बुत बनाऊंगा या कोई एक सिंबल बनाऊंगा और मैं अपनी जो धनुष विद्या है उसको प्रैक्टिस करता रहूँगा, उसका अभ्यास करता रहूँगा और फिर करते करते जितना बन सकता हूँ एज अ गुड स्टूडेंट, मेरिटोरियस स्टूडेंट। अब यही कर रहा हूँ जंगल, और कभी ये खबर हो जाती है कि दिस इज व्हाट दिस गाय इज डूइंग, एकलव्य। एंड देन द्रोणाचार्य कम्स बैक टू एकलव्य, और देयर इज अगेन अ मीटिंग, and he said, and this, by this time it seems that Eklavya has, in a sense, displayed some kind of accomplishment. Now, of course, there is a character जो beings में character है ना, अर्जुन। तो कहीं द्रोणाचार्य को जब द्रोणाचार्य देखते हैं एकलव्य को shooting the arrow, he sees that this guy is as good as Arjun. And at that point, he realizes that this tribal boy of a lower caste is a real threat to Arjun's so-called top position in the corporate ladder. तो द्रोणाचार्य उससे फिर मिलते हैं। द्रोणाचार्य कहते हैं एकलव्य से कि अब तुम मुझे गुरु मानते हो तो मुझे दक्षिणा दे दो। जिसने गुरु नहीं माना, मतलब उसको शिष्य नहीं माना, और वही आदमी कह रहा है कि आप मेरे शिष्य हो तो मुझे दक्षिणा दो। और ये कहता है हाँ आप मेरे गुरु हैं, मैंने आपको गुरु माना है तो मैं दक्षिणा दूंगा, अब जो मांगे मैं दूंगा। एंड वी नो द स्टोरी। वो कहते हैं कि आप, कहता है कि आप अपना अंगूठा काट कर मुझे दो दक्षिणा। अंगूठा काट लिया तो वो क्लियरली और धनुष नहीं चला सकता, यानी कि वो फिर से वहीं पहुंच गया जहां से शुरू हुआ था। बिकॉज इफ यू कट ऑफ द अंगूठा, देन यू हैव अगेन बीन टेकन आउट फ्रॉम द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट। बिकॉज योर स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट ऑफ आर्चरी, दिस इज एसेंशियल रिक्वायरमेंट टू हैव द अंगूठा। अंगूठा काट लिया तो एक दक्षिणा देने से उसकी अप्रेंटिसशिप, उसका लाइफ ऑफ स्टूडेंट कैंसिल हो गया। तो आप सोचिए क्या अजीब ट्रिक है। पहले ऋण नहीं दे सकते क्योंकि आप उस कास्ट के नहीं हैं, आप उस क्लास के नहीं हैं, आप उस कैटेगरी के नहीं हैं कि आप ऋणी हो सकते हमारे गुरु के। उसके बाद जब आपने उनको गुरु मानकर सीखा और इस लेवल पर पहुंच गए कि आप भी उस लैडर में कहीं ऊंची जगह पहुंच सकते हैं, तो फिर आपको बुलाया गया और आपको कहा अब जो मैं गुरु, आपने हमें गुरु माना है तो आप अपना अंगूठा दे दीजिए कि आप उस लैडर के जहाँ पहुँचे वहाँ से आराम से नीचे गिर खत्म हो जाएगा। बेसिकली इट्स अ मर्डर, इट्स अ काइंड ऑफ मर्डर ऑफ द अंगूठा, व्हिच मीन्स मर्डर ऑफ द पर्सन, ऑफ द आर्चर, ऑफ
is still alive, the boy is still alive, but essentially it is murder, है ना? तो गुरु मानवीय ऋण में आपको डालेंगे नहीं कि ऋण का दक्षिणा अदा करना पड़े, दोनों चीजें करना है। तो मुझे लगता है दैट सम लेसन, क्लियर लेसन है इन दिस होल थिंग। ये पूरी चीज जो ऋण वाली बात है, डेट वाली बात है, खासकर मुझे नहीं लगता ये सिर्फ स्टूडेंट टीचर की बात है, स्टूडेंट गुरु की बात है, ये अक्रॉस द बोर्ड ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं इस तरह का एक इनजस्टिस या एक ऑप्रेसिव लॉजिक, द लॉजिक ऑफ डेट इज एन ऑप्रेसिव लॉजिक एंड अ ट्रिकी लॉजिक, इट्स अ काइंड ऑफ हिपोक्रिटिकल लॉजिक, बट इन द एकलव्य स्टोरी इट कम्स आउट इन अ वेरी वेरी क्लियर वे। एक और कहानी है जो दूसरी साइड से मुक्तिबोध की कहानी है, ब्रह्म राक्षस का शिष्य, कविता भी है ब्रह्म राक्षस। ना ब्रह्म राक्षस एक ब्राह्मण बिल्कुल दूसरी साइड से जो इज अ ग्रेट टीचर, यू नो, ब्रह्म राक्षस, लेकिन वो ब्रह्म राक्षस है, यानी कि वो दूसरे जैसा इंसान नहीं है, वो गुरु है जो भूत है, मतलब उसकी आत्मा भटक रही है गुरु ब्राह्मण की। क्यों? क्योंकि उसे सफिशिएंटली मेरिटोरियस स्टूडेंट नहीं मिला जिसे वो अपना पूरा ज्ञान दे सके, और अगर ज्ञान दे तो उसकी आत्मा भी मुक्त हो जाए, लेकिन उतना मेरिटोरियस वर्दी स्टूडेंट उसको नहीं मिला एक और कि वो मुक्त हो सके, और इसलिए उसकी आत्मा भटक रही है। तो ये ब्राह्मण की तरफ से, और ये ट्रेजेडी, लिसन है, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, इट इज अ ट्रेजेडी कि the burden of being a guru, of being a brahman is that you have to, in a sense, find someone worthy of being in your debt so that you can be free. But there's apparently no one worthy of this Brahma Rakshas's debt. Now it seems to me that both stories in today's times have now found a kind of modification. I think both stories are very relevant in our times, but in a very different form, in a very different way. The second story is, of course, ब्राह्मण आजकल रिटायर हो जाते हैं। वो क्योंकि रिटायरमेंट एज होती है तो उसके बाद आप भटकते रहे, लेकिन उसके बाद अगला ब्राह्मण आ जाए। तो ये एक लॉजिक है जहाँ पर ये पूरा जो टीचर का आइडिया है इसको प्रोफेशनलाइज करना, इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट इनटू अ लाइफ लॉन्ग, या एक जन्म से दूसरे जन्म, 7 जन्म या जन्मांतर का ऋण न होकर उसको एक स्ट्रक्चर में बांधना। तो अभी भी मुझे लगता है वेरी क्लियरली मुझे लगता है सभी मानेंगे कि द रिलेशनशिप इज अ वेरी वेरी हायरार्किकल रिलेशनशिप। इट इज in a sense a relationship of strangely debt as a kind of obligation and power at the same time. The student has to be in debt so that he can then repay the debt and then put someone else in his or her debt, and so the story will go. But instead of the story being sent across lives and in some kind of eternity, the structure is within our historical, social, educational institutions today. That's one side. And the other side is, I think, and that's more sort of interesting and has deeper implications, that the eklavya today is, on the one hand, remains the eklavya of the old times, which is very clear that there is the old times are the new times, that there are people excluded, simply out, simply not in the logic of debt. You are not credit worthy. तुम्हें forget you being in debt. तुमको शुरू से ही कुछ नहीं मिल सकता कि तुम स्टूडेंट की लाइफ जिंदगी में आ सको और फिर कभी जाकर प्रोफेशनल ऑटोनॉमी तुम्हें मिल सके, तुम सब्जेक्ट बन सको, जो भी सब्जेक्ट हो, कुछ तो बिल्कुल आउट है, वो तो है। एट द सेम टाइम देयर इज अनदर काइंड ऑफ लॉजिक दैट इज, आई थिंक, वर्किंग नाउ, एंड दैट इज कि जितना हो सकता है, as much as possible, people must also be put into debt. People must also be given some kind of a minimal sense of, what can you call it, some sort of a interest or a stake in the system. एकलव्य का पॉइंट ये था द्रोणाचार्य की तरफ से कि आपके पास कोई स्टेक ही नहीं है,
और इन दैट सेंस आपके पास कोई पावर भी नहीं, इन दैट सेंस आप प्रोलेटारियत थे। मार्क्स ने क्या था? मार्क्स ने कहा था कि you have nothing to lose but your stakes, but your checks. You have nothing to lose but your checks. Work, proletariat, unite. इसका मतलब क्या? मतलब है प्रोलेटारियत का मतलब है कि जिनके कोई स्टेक्स नहीं, जिनका इस सिस्टम में रहकर ऐसा कुछ नहीं है जिसे वो बचाना चाहे। तो जाहिर है कि ऐसे लोग अगर इकट्ठा हो तो वो इस पूरे सिस्टम को बदलना या उससे बाहर निकलना या उसको बिल्कुल एक तरह से रेवोल्यूशनरी चेंज वो उसको चाहे, ये जाहिर है। तो इसको संभालने के लिए ऐसा न हो, सिस्टम बिल्कुल फंडामेंटली बदल न जाए, इसलिए मुझे लगता है आज के समय में एक ग्लोबली और सिर्फ एजुकेशन के मामले में नहीं, अक्रॉस द बोर्ड in politics, in statecraft, in the general, what is called the work of the citizen, or civic virtue, civic obligation, civic duty. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, राइट्स एंड प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव ड्यूटीज। ये पूरे एरिया में एक तरह का डेट क्रिएट करना कि आप You ask for exactly जो एकलव्य ने उस ज़माने में द्रोणाचार्य से माना था, a right to be obliged, a right to have a debt. तो दोनों चीज़ें, on the one hand absolute exclusion कि कुछ एक ऐसा तबका रहेगा, ऐसा क्लास रहेगा, ऐसा कास्ट रहेगा, ऐसे लोग रहेंगे जिनको हम जरा भी सिस्टम में आने, जिनका कोई स्टेक इन दैट इज प्रोलेटारियत। बट एट द सेम टाइम ये भी होगा कि ह्यूमन पॉपुलेशन को, इसलिए आप एक चीज़ एक सेकंड में आ रहा हूँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी जो यूनाइटेड स्टेट्स में उन्होंने बातें कही उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग दो चार बातें निकल कर आई। और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही नहीं, कमेंट्री जो होती रहती है आजकल न्यूज़पेपर्स में, टेलीविजन पर, उसमें भी बात इंटरेस्टिंग निकल कर आई। एक ज़माना था जब हम लोग बड़े हो रहे थे इमरजेंसी के वगैरह के टाइम में, तब क्या कहा जाता कि हमारे देश कांग्रेस का ज़माना था, इंदिरा गांधी इमरजेंसी का टाइम था, इमरजेंसी में ये बात बिल्कुल एक क्रिटिकल पॉइंट पर पहुँच गई कि इस देश का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो पॉपुलेशन, क्योंकि यहाँ इतने लोग हैं तो इस पॉपुलेशन को कहीं रोकना पड़े और उसके लिए इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा कोर्सेस, बहुत ज़्यादा इलीगल तरीके अपनाए और उसके बारे में हम सब जानते हैं। वी नो आज वेरी इंटरेस्टिंगली इन द स्पीचेस दैट आर मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, in the way people talk, economists for example, they will say one of the great strengths of our country is the fact that we are such a large democracy. Which means what? We have so many people. Just the opposite paradigm. We are not saying, oh, we have so many people, our democracy is endangered or weakened by so many people. No, we are saying that, oh, we are the largest democracy. Means area to hai, but so many people within the so-called democracy. So strangely, population has become a point of asserting some kind of power, sovereign power ही नहीं, a kind of tactical power. Hence, in the UN, when Security Council में जगह के लिए लोग फाइट कर रहे हैं इंडिया की तरफ से, तो क्या कहा जाए? यही चीज़ कही जा रही है कि हम इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, इतना बड़ा जनतंत्र है कि हमारे भी सिक्योरिटी काउंसिल में हम होने चाहिए। लेकिन उस ज़माने में ये बात नहीं कही जाए, उस ज़माने में सिक्योरिटी काउंसिल की बात वहाँ भी थी, लेकिन वो दूसरा लॉजिक था, वो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स भी अलग था। लेकिन ये बात उस ज़माने में नहीं कही जाएगी कि हम इतने सारे इंडियंस, उसने कहा हम इतने सारे इंडियंस हैं, वो इंडिया की प्रॉब्लम है। एक वेरी डिफरेंट ना, इसको अगर आप ये डेट वाली बात से जोड़ें तो मुझे ऐसा लगता है, और ये सिर्फ स्टूडेंट्स की बात नहीं है, स्टूडेंट्स इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ क्या कहें माइक्रोकॉस्म, a kind of the student's life is a kind of, and this is linked to Lyngdoh, it's a kind of experiment, it's a kind of corporate trial and error being conducted in the university in the university in the university space, which becomes a kind of experimental space in a laboratory. So university is a laboratory for a corporate experiment. But behind that experiment, the real message is that on the one hand, there must be absolute exclusion of peoples. At
At the same time, all peoples must be mobilized into this kind of global debt as power. I think both these things are happening at the same time, and this is a very new thing. This is a very new thing in terms of its global kind of impact, its global kind of logic, which is making us think of ourselves in very different ways. So, for instance, when you say, one of the first things that happen is, on the one hand, this proletarization, this kind of making the student someone without a stake, or taking the stake away from the student, excluding the potential student, the eklavya, from the system itself, from the apprenticeship itself makes eklavya also clearly a potential rebel. Eklavya didn't rebel, but you can have versions of eklavya who rebel. So plays have been written, stories have been written on the eklavya story, which are stories of eklavya saying, I don't want that rebel. I don't want that debt, that grammatical debt. I default on the debt, and I do it with a smile. As different, for instance, from the Vidarbha farmer, who doesn't do it with a smile, clearly, who has to default and die. As different from that, there are versions of eklavya in contemporary imagination, in Dalit literature, where eklavya says, I don't want to be this sort of a student. I don't want this life of a student if this is what a student's life is. That's one side. So, in that sense, eklavya is also a recipe for a rebel, for somebody who tomorrow will become a terrorist in the eyes of some people, of the state, for instance. That's one side. So there is a clear logic of exclusion, and there is a potential rebellion being interpreted in all sorts of ways that these are dangers to society and the state by the powers. That's one side. But on the other side, at the same time, there is also the state's logic that let's get not eklavya, but some part of eklavya into the system. Let's get this guy or these guys interested in the system, so that tomorrow they will not rebel. Why will they not rebel? Because one thing eklavya is going to happen with someone like eklavya is, there is not just one eklavya. In Mahabharata there is one eklavya. But in reality, there are thousands and thousands of eklavyas. Now when there are thousands and thousands of eklavyas, then clearly, after a threshold, after a point, they will become a collective. They will become a rebellious, not just individual, but group, collective, party. Clearly, that will happen, and that has happened, which is clearly very dangerous. Because as a collective form, eklavyas will then form a kind of counterpower. Not just the individual eklavya as a symbol, but a real eklavya collective. That is terribly dangerous for the state, for power. So clearly, you have to also break the collective. So I think one of the things that's happening in our times is, in an attempt to break the collective, eklavyoं को सिस्टम में लाना भी है, नहीं भी लाना. तो एक अजीब सा डिवाइडेड लॉजिक है. तो एकलव्य के एक हिस्से को हमें सिस्टम का हिस्सा बनाना, कहना है कि यार हम तुम्हें थोड़ा सा स्कॉलरशिप देंगे, हम तुम्हें कुछ इंसेंटिव देंगे, हम तुम्हें कुछ मदद तुम्हारी करेंगे, कुछ करेंगे, और कुछ ऋण तुम्हें होगा सिस्टम. अगर ऋण होगा तो तुम्हें ऋण वापस करना पड़ेगा. किसी पॉइंट पर तुम्हें कहना पड़ेगा कि सिस्टम ने मुझे कुछ दिया है तो मुझे सिस्टम को वापस देना. और ये जो ऋण होगा, ये पैसों का ऋण नहीं होगा, क्योंकि पैसे तो हम इस तरह देंगे कि एक तरह से हम स्टेट की तरफ से आपको, क्योंकि आपके साथ बुरा हुआ है, हम मानते हैं आप एक्सक्लूडेड रहे हैं, तो हम आपको एक तरह से सौगात देते हैं, हम आपको देते हैं पैसा, आपको दूसरे तरीके से वापस करना है. डेट, गुरु ऋण, स्टेट यहाँ गुरु हो गए. वो कैसे? वो क्लियरली इस तरह से कि आपको इस सिस्टम का हिस्सा बनना है, और आपके अपने एम्बिशंस, डिज़ायर्स को इस सिस्टम से आइडेंटिफाई करें. आप अगर आपसे कल पूछे कि आप क्या चाहते हैं, तो आपको कहना इस सिस्टम में मैं और मेरिटोरियस होना चाहता हूँ. आज मैं जहाँ हूँ वहाँ से और ऊपर जाना चाहता हूँ. आज मैं जहाँ हूँ उससे और बेहतर ज़िंदगी चाहता हूँ. आज मैं गरीब हूँ तो कल मैं अच्छी कमाई नहीं चाहता हूँ. अगर मेरा परिवार आज मुश्किल में है तो परिवार के लिए मैं चाहता हूँ कि परिवार एक अच्छी
उसकी हालत सुधरे, मेरा बच्चा कुछ अच्छी नौकरी करे। सारी ज़िंदगी गांव में मैंने बिताई तो बच्चा सारी दुनिया देखे। और ये बातें हर चीज़ इसमें इज़ ट्रू एंड मूविंगली सो, उसमें सच्चाई है। और ये सच्चाई एक दर्दनाक सच्चाई हमारे दिल को छूती है। लेकिन the moment this logic becomes a general logic, very clearly what has happened is the so-called collective has been broken down into the standard what is called modern bourgeois society कह लें, capitalist society कह लें, modern ही कह लें society. The Eklavya collective is broken down into Eklavya individual. That. Now this will be okay. हम इसको मान सकते हैं अगर ये पता रहता कि वाकई even as an individualistic society, so-called meritorious, merit-oriented society, life of students is a life of standing first, second, third from school to college and identifying with that kind of a hierarchy of who does well. So centers of excellence. मुझे आज तक इस बात का मतलब नहीं समझ। I can understand centers of truth, centers of excellence होता क्या? लेकिन चलो ठीक है, मान कि कुछ लोग एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सिस्टम में मेरिटोरियस होंगे और उसमें, लेकिन सच्चाई ये है, हम सब जानते हैं और रिसर्च हमें बताएगा, फैक्ट्स हमें बताएंगे कि ऐसा है नहीं। है यही कि कुछ लोग एंटाइटल्ड हैं और कुछ लोग एंटाइटलमेंट से बाहर। किसी न किसी पॉइंट पर एक मार्क है, एक बैरियर है जिसके इधर कुछ लोग हैं और उधर बहुत सारे लोग। तो एकलव्य पूरी तरह से अंदर भी नहीं है, पूरी तरह से बाहर भी नहीं है। एकलव्य को डिवाइड करना एक डेट के लॉजिक से मुझे लगता है आज के ज़माने में एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही इनएविटेबल तरीका, और सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ग्लोबल लॉजिक। इसको दिखाया जा सकता है बिल्कुल, मतलब फैक्ट्स और पॉलिटिकल एनालिसिस से ये चीज़, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एनालिसिस से ये चीज़ दिखाई जाती है। इसका एक उदाहरण है बिल्कुल इंडिया सो कॉल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से दूर, जैसे ग्रीस में जो चीज़ें हुई, ऑल ऑफ यू नो last many months. Now, one of the things that Greece has experienced is that the people of Greece have been told that look, you have taken so much debt from all sorts of banks and private sources that you have reached a position of being bad debtors. अब तो वापस कर ही नहीं सकते। एक ज़माने में तुमको क्रेडिट वर्दी माना गया था, लेकिन अब तुमने इतना ज़्यादा ले लिया है डेट क्रेडिट कि अब तुम वापस नहीं कर सकते और नहीं कर सकते, ये भी सच है। और गिवन यू कांट रिटर्न द डेट, your position is that of someone who has to now beg the ones who are in a position to what is called bail you out. Now, what does it mean to say bail you out? It means कि your debt can be माफ कर सकते हैं तुम्हारे debt। जैसे इलेक्शन से पहले चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो कोई और गवर्नमेंट हो, फार्मर्स ऑफ महाराष्ट्र इधर जहाँ पे दिनों दिन लोग सुसाइड करते हैं डेट के प्रेशर से, हर बार ये बात उठती है कि क्यों ना एक लार्ज चंक में जस्ट डेट माफ करो, जस्ट बस न रहे। तब एक तरफ से कोई ऐसा किया जाए क्योंकि इलेक्शन से बिल्कुल पहले अगर किया जाए तो क्लियर है कैलकुलेशन है, दूसरी तरफ से कहा जाता है कि ऐसा मत करो यार, ठीक है बुरा हो रहा है उनके साथ, लेकिन ऐसा करना उनकी कैरेक्टर के लिए अच्छा नहीं है। कैरेक्टर के लिए अच्छा नहीं है क्या मतलब ये है कि मरते हुए भी आप अपनी सोशल कैरेक्टर, सिटीजन के हिसाब से इकोनॉमिक कैरेक्टर बचाए कि आपको प्रोडक्टिव होना। अगर आपका डेट माफ हो गया तो आप लेजी हो जाएंगे। लेजीनेस इज बैड फॉर द कैरेक्टर। सो विदर्भ वाले लोगों को देंगे तो सबको देना पड़ेगा, और सबको देंगे तो पूरा देश लेजी हो जाएगा, पॉपुलेशन लेजी हो जाएगी। यानी कि कुछ डेट तो रहना है, पूरा तो माफ नहीं कर सकते। यही चीज़ ग्रीस में, लेकिन ग्रीस में ये कहा गया कि नहीं, एक प्रॉब्लम है, माफ थोड़ा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्रीस एक पूरा देश है। Unlike the Eklavya collective, which you can break,
चाहो ना चाहो वो यूरोप का एक हिस्सा है, ट्रेडिशनली है, क्लासिकली है और कंटेम्प्रेरी मार्केट के हिसाब से है, पॉलिटिक्स के हिसाब से। अगर ग्रीस को सीधे एकलव्य वाली लॉजिक का इस्तेमाल ग्रीस के साथ कर लें और कह दें कि यार तुमको तो हम नहीं ऐसा कर सकते, माफ़, तुम्हें तो ये करना पड़ेगा, तुम्हें तो इसका दाम देना पड़ेगा, उसमें आप जो भी हो जाए तुम्हारे साथ। अगर पूरी तरह से ऐसा कर ले तो एक खतरा ये है कि आप EU में, यूरोपियन यूनियन में ग्रीस रहे ही ना। अगर ऐसा हो जाए तो यूरोपियन यूनियन के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। स्टॉक मार्केट के लिए गिर पड़ेगा, ग्लोबली स्टॉक मार्केट गिरेगा, दुनिया भर की प्रॉब्लम। तो कहीं ना कहीं ग्रीस को रहना भी, लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि मैं बस माफ कर दिया, कहा कि चलो और ग्रीस जर्मनी सब एक, ये नहीं हो सकता। ये कहना है हमारे सिर्फ, और ये बात सिर्फ यूरोप के लोग नहीं कर रहे, यूरोप के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, इकोनॉमिस्ट एंड प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट, वो क्या है, इंडिया में भी अगर आप पढ़ लें दिग्गजों, वो भी ये कहेंगे अरे यार ग्रीस से एक लेसन सीखना चाहिए, कैसे हमें अपने इकोनॉमी को, अपने डेट्स को मैनेज करना है, हमें प्रोडक्टिव होना है, हमें स्मार्ट होना है। ग्रीस स्मार्ट नहीं थी, तो कैसे आप उनको एक तरह की पनिशमेंट दे सकते हैं कि आप स्मार्ट क्यों नहीं, व्हाई नॉट यू स्मार्ट इनफ टू मैनेज योर डेट्स वेल? तो क्लियरली द पनिशमेंट इज दिस कि यू हैव टू डिस्प्ले ऑस्टेरिटी। हम आपको माफ तो करेंगे आपका डेट, क्योंकि आपने डेट इतना ज़्यादा ले लिया, आप वापस नहीं कर सकते, लेकिन आपको दिखाना है कि आप किस तरह से आपने जो किया उसके लिए कितने शर्मिंदा हैं। आपको अपना सच पाना, ग्रीस को अपना सच पाना, शर्मिंदा आंखें और ग्रीस की नीचे में, ये है प्योरिटी। एंड ऑस्टेरिटी इज नॉट merely the reality of austerity, which is bad enough. Pensions going off, old people, all the productive categories से unproductive categories को अलग करना, unproductive categories को बिल्कुल एकलव्य लॉजिक से एकलव्य unproductive out, little bit productive एकलव्य can be in. This is the logic, है ना? लेकिन ये सिर्फ नहीं, इतना होने से नहीं चलेगा। आपको as a society, as a nation, आपको हमारे सामने ये बात माननी है और एक काइंड ऑफ दिखानी है, डेमोन्स्ट्रेट करना है। यू हैव टू एनैक्ट योर स्टेटस एज बीइंग बैड डेटर्स, इंडिजेंट, अनप्रोडक्टिव, unsmart, clumsy. So you are sovereign, but you are a little less sovereign than the other sovereign, for instance Germany. So it's a peculiar kind of a relationship now in the nation-state idea. No one is clearly sovereign as opposed to colonized, imperial as opposed to subjected. No. Now it seems to me that everyone is sovereign, but some are more sovereign. It's a kind of differential power. And everyone is in debt, but some have more than others. Some have more creditworthiness than others. Because you see, debt is very complicated. जब अमेरिका में पूरा जो मार्केट क्रैश किया था, तब क्यों क्रैश किया? इसलिए किया था कि डेट मैनेजमेंट इतना ख़राब था कि इतना ज़्यादा बोरिंग हो गया था कि एक तरह से पीछे उनके पास कुछ रियल सब्सटेंस नहीं था। तो इसका मतलब क्या है कि डेट ना दें? नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। कंपनीज चली नहीं सकती बिना डेट के। कंपनीज का लॉजिक है कि डेट सर्कुलेट करें। इट इज द मैनेजमेंट ऑफ द सर्कुलेशन विच डिटरमिन्स द सक्सेस ऑफ corporations, peoples and individuals in our times. It's not a question of being in debt and not being in debt, being free and being indebted. It's a question of management of debt. तो मैंने एक इंटरव्यू देखा था, interestingly, very interesting. चाइना में, हालांकि ये बहुत पहले की बात है, जब अमेरिका में क्रैश हुआ था उसके बाद चाइना के इकोनॉमिस्ट BBC के कमेंटेटर से बात कर रहे थे, and the commentator asked, because in China there's a huge amount of debt circulation in the building industry, in the construction industry, just like in America. A lot of buildings are made and people, firms are given huge amounts of debt to build these buildings, in the construction of the new urban centers of China. So they asked me, aren't you afraid that something like the American crash will happen? I said, no. How come you are not afraid? I said, yeah. We will
undertake subprime financing, debt financing, but under Chinese characteristics. So, peculiarly, Chinese characteristics mean that within China, as if there is an inherent kind of a wisdom, a kind of sense कि कितना debt लेना है और कितना नहीं लेना, कहाँ रुकना है और कहाँ जाना है, जो West में नहीं है. West doesn't have the West is wild, China is not wild. Now, between then and now, what has happened to China is a totally different question. वो उसमें मैं नहीं हूँ. But it's a very interesting idea that in each of these cases, debt is essential, but it has to be managed, both economically but also spiritually. Debt is a kind of spiritual relationship. And the Greek guys, because they have done it badly, they have to now show how their spirits are broken. The Eklavya spirit has to be broken. The Greek Eklavya spirit has to be broken. I think that is the real political wound that European sovereignty and world sovereignty and India is part of that. Because this is the dominant lesson which India draws कि हमें भी अपना debt manage करना है और जो नहीं करे उसको उसकी punishment उसको punish. So I think when you look at all this and you see all this coming back to how things are in your own lives, you can make you can dot your I's and whatever the other letter is. You can make the connections because there is something here which is objective, logical, systemic and all that, but there is also something here which is lived as a relationship of obligation, guilt, at the same time power, merit and all these notions which surround us. And it is a very clear logic, but it is a very deep logic, which is not easy to escape. So everyone, all of us want to be credit worthy. Everyone. Or at least that's the idea. The one who doesn't want to be credit worthy is either mad or potentially a revolutionary. Now a potential revolutionary is also today's terrorist. Today's indigent. Today's unproductive, lazy, poor. So the poor, the terrorists are all exchangeable for the potential revolutionary from this angle. And the student. As much the student. So for all these reasons, it seems to me there is, in this entire logic, some kind of an attempt to do two contradictory things, which are not contradictory, because they enter into a nice kind of complex system. As I said, just to end with this kind of summary. On the one hand, to clearly, violently exclude a large section of the population as not entitled to the rights of citizenship, in that sense proletarianization. You know, one of the things which keeps happening in the JNU context when I go out and there are discussions between good people, liberal people. Not all liberal people are good people, not all good people are liberal. Just making that clear. But generally, between friends, let me put it this way, between friends. And at one point, everyone, and they are all above 40, they kind of share they look at us, some of us in JNU, and they look at us as little incredulity. किस दुनिया में तुम रहते हो, तुम्हारे स्टूडेंट, तुम्हारी यूनिवर्सिटी अब तक पुरानी फीस स्ट्रक्चर चलती है. अभी तक उतना कम देना पड़ता है स्टूडेंट्स को पैसा, जबकि सारी दुनिया में इतना कुछ बदल गया. As if this कम पैसा is a sign of some kind of primitiveness. It is not a sign of anything in the way that you talk about as a kind of self-assertion. It is as if you don't understand anything beyond 15 days. Your economics is limited to that. Beyond that, we understand up to the convertibility of dollars into rupees and yen and all that. These guys, the JNU people do. So the other day, Jagdish Bhagwati was saying, mentioning the Indian finance minister, because she is from JNU. That she's from the party that he admires. But she's from JNU, they don't understand trade. Yeah, Jagdish Bhagwati said, they don't understand trade, which means they don't understand global debt management, global circulation. They understand fundamental theories of economics, maybe political economy and all that, but not actual trade management. Yeah. So, in this kind of a context, it seems to me, on the one hand, there is a clear logic. You have to be
into the system, have a stakes in the system. And politically the meaning of that stakes is you have to be individualized, you have to be fragmented. You don't identify. See, अगर मुझे अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में डालना है और आपके अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में डालना है, तो दोनों की डिज़ायर बहुत वर्दी, बहुत जस्टिफाइड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर पॉलिटिकली ये बहुत मुश्किल है होना कि किसी भी डीप सस्टेनेबल सेंस में मैं और आप एक कलेक्टिव बना सकें ऑन दिस सो कॉल्ड कॉमन इंटरेस्ट। कलेक्टिव तभी बनेगा दोनों का बच्चा एक ही बच्चा होगा, सीरियसली। या ये होगा कि दोनों बच्चों को एक ऐसी सिमिलर सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी, जैसे बस का एक्सीडेंट हो गया, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन कुछ होता है तब पेरेंट्स साथ में रेबल करेंगे, वो रेवोल्यूशन है और बिल्कुल सही। लेकिन क्लियरली वो उस घटना के परिप्रेक्ष्य में उसके बाहर किसी भी तरह का एकलव्य कलेक्टिव नहीं बन सकता। इसलिए अगर आपका स्टेक है सिस्टम में तो उसमें गलत नहीं है, लेकिन पॉलिटिकली वो आपको एक लिमिट के नॉर्मल, ऑफकोर्स लोग अपने स्टेक को छोड़ने को भी तैयार हैं और ऐसे मौके आते हैं जो वहाँ के क्रांतिकारी मौके होते हैं, और किसी भी मौके पे हो सकता है जब हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपनी चीज़ को छोड़कर जॉयफुली डिफॉल्ट करते हैं। अधिकतर हमें इस तरह डिफॉल्ट करना पड़ता है कि उस डिफॉल्ट के प्रभाव में हम अपने आप को मार लेते हैं। जैसे हमें पता है हज़ारों लोग अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरा डिफॉल्ट होता है जो रेवोल्यूशनरी होता है कि हम जॉयफुली कहते हैं कि हमें ये क्रेडिट नहीं चाहिए आपको। हम सिर्फ ये नहीं कहते कि हमें क्रेडिट नहीं चाहिए आपको। हम ये एक फिल्म थी सत्यजीत रे की, हीरा राजा पेश, उसमें क्या होता है, जो राजा होता है, हीरा राजा, वो भी बड़ा ऑपरेसिव होता है, लेकिन आखिर में उसका कुछ दिमाग कुछ हो जाता है, हिल जाता है। तो वो सब लोग हिरन का एक बहुत बड़ा एक किला, सब उसको अटैक कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि क्या था लाइन क्या थी, हीरा राजा जैसे वो किले को उठा तो एक कपलेट था बड़ा बहुत सुना, रस्सी पकड़ के खींचो राजा खान मतलब बिल्कुल टुकड़ों में। आखिर में क्या होता है, राजा भी जा रहा है, राजा भी यही कह रहा है कि राजा को खान। ये है अल्टीमेट डिफॉल्टिंग, जब क्रेडिटर खुद अपने क्रेडिट पे डिफॉल्ट है, जब बैंक कहता है कि इस पैसे का कोई मूल्य नहीं। और ये होता है, ये सिर्फ आइडियलिज्म नहीं है या वाइल्ड बात नहीं। रेवोल्यूशन जब हुई है किसी भी समाज में, तब अल्टीमेट मोमेंट ये होता है जब क्रेडिटर कहता है कि हमारा जो मेजर है, मनी, वैल्यूज, इंस्ट्रूमेंट्स, वो अब वो मेजर रखते ही नहीं है। इनहेरिटेंस, फ्रेंच रेवोल्यूशन में कहा गया था कि आई डिफॉल्ट ऑन माई इनहेरिटेंस। चर्च ने कहा था ना कि आप सब चर्च का हिस्सा हैं, आप सब क्रिश्चियंस हैं। तब रेवोल्यूशनरीज ने कहा वी डिफॉल्ट ऑन आवर इनहेरिटेंस एज क्रिश्चियंस एंड वी डू इट जॉयफुली बिकॉज वी आर नॉट अ न्यू। दूसरी बात है कि प्रेफरेंस रेवोल्यूशन के बाद क्रिश्चियनिटी आती है, कैसे आती है, वो सब दूसरी बात। पर वो मोमेंट था जब आप क्रिश्चियनिटी जो पावर का सोर्स उसके प्रति डिफॉल्ट करें, जॉयफुल। आप सिर्फ डेटर डिफॉल्ट नहीं करते, क्रेडिटर अपने क्रेडिट को रिजेक्ट करते, क्रेडिट वाली पावर को रिजेक्ट करते। That is it's something which is absolutely at the heart of change. Without this kind of a defaulting, there is no change, and change does happen. Now, given this, you have to manage the situation such that ये वाली defaulting भी ना हो, लेकिन दूसरी वाली defaulting अगर होती है जो fragmentary, जो इस प्रेशर में होती है कि अब मैंने इतना उधार ले लिया कि मैं वापस नहीं कर सकता, तो मैं अपने आप को मार लूँगा, तो कुछ लोग तो मरेंगे। और गवर्नमेंट का ये ऐसे कुछ कोलैटरल डैमेज डेवलपमेंट का होता है। लेकिन अगर मरने की संख्या बढ़ती रही तो ऑब्वियसली पॉलिटिकली बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, रिबेलियन हो जाएगा। दूसरा, आपका इकोनॉमिक जो प्रिंसिपल है कि ऑल मस्ट बी मेड डेटर्स, टेंशन, ये गड़बड़ होगा, क्योंकि debt will become a dangerous thing. No? If people start dying under the pressure of debt again and again, so you must get people, farmers, students into the system and give them a debt which can be managed. Now, it is not a black and white thing. It's a very complicated thing. In Bangladesh, for instance, the microfinance idea is a debt empowering idea. And there was a very, very strong political change idea in that. So women were given small debts, microfinance, small debts in villages. And the idea was that women can
repay the debt, because they will repay the debt. They have, women are more responsible, unlike the men, generically. And hence, women are more worthy, credit-worthy people. And it worked quite a bit in Bangladesh, but we also know what happened to the whole Grameen Bank and UNOS and all that, because the whole thing also became a corporate, world corporate idea, a global corporate stakeholders conglomerate. So we have to differentiate, I think, conglomerate and collective. The Eklavya collective and the global conglomerate. But it is a complicated thing, because at some point it is true that Bangladeshi society, Indian society, has never been able to achieve incident. Never. Which is a genuine sense of the woman. Ella Bhatt, the writer on credit and microfinance, talks about it. The woman as a micro person, as a micro subject, not the global mega subject, which is a kind of idea of very machismo of the subject who changes the world through great economic speeches and policies, who speaks about humanism in the most brutal tones. But a micro subject, the woman, the Bangladeshi rural woman, who is literate, who has a sense of enterprise, who makes a change in the village structure, family structure, and individual sense of enterprise. So it's a very important idea. But at the same time, we realize historically that it has also fed into the most oppressive global system of debt. So it's not a simple black and white question. But at the same time, when the moment of change comes, the defaulting becomes a real question of both something like absolute change and, on the other hand, crisis management. तो मेरा ये है, जब वो दोस्त कहते हैं कि यार ये फीस इनकी क्यों नहीं बढ़ती चेहरे वालों की, तो मैं कहता हूँ कि मैं कहना चाहता हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे दोस्त कहते हैं कि बिल्कुल, क्योंकि आप ये समझ लेते हैं आज के ज़माने में कि गिवन है कि फीस तो बढ़नी ही है, स्केल ऑफ इकोनॉमी तो बढ़ेगा ही, बदलेगा ही, पैसे तो आपको अपने पॉकेट से निकालने ही है। तो कहीं तो ऐसा है जो इस इकोनॉमिक डॉगमा को क्वेश्चन जो जेन्यू करता है, apart from every other reason. The very questioning of economics is the truth of our lives. कि यार ये तो this is inevitable and it has to be taken with a pinch of salt and with a smile. कि पैसे तो स्केल बढ़ेगा, ग्लोबल इकोनॉमी है, दाम बढ़ेंगे, फीस ज़्यादा देनी होगी. Someone says no to this economic supposed theology. It's a kind of theology, God, economic God कह रहा है कि आपको फीस मानना ही पड़ेगा. तो कहीं तो है जो ये मानने को तैयार है, और ऑफ कोर्स उसका दाम भी देना पड़ेगा. उसके खिलाफ मेजर्स भी होंगे जो आप लोग भी बता रहे हैं कि हो रहा है, तो उस पर मैं नहीं जाना चाहता. लेकिन लॉजिक मुझे लगता ही है, लॉजिक long term economic movement into the population to make it part of the system, but it's also short term threats to get you into the system. If you go against it, then you'll be punished. But also it's a temptation. It's clearly also a kind of bait that identify with the stakes and you will be rewarded. You will be given a kind of performance reward. In the best circumstances, it will be neutral. You will meet a kind of fair system. In the worst circumstances, sure, there's corruption in India and all that, but that is only temporary. You see, one of the things that this whole economy in the Indian context, unlike the US, for instance, it's a very, and I'll end with that. And you can see from Modi's speeches and all that, this whole thing. Startup is a very interesting word, you know. Startup is not just a new economic idea, a new commercial mercantile idea, which it is. It's a new form, which, because it's new, asks not to be registered, not to be hounded by old government machinery, which is ancient and, you know, some kind of a archaic system of, so you give us flexibility. But at the same time, there's another meaning, which is, because it's a startup, it's new, just like a new young child will make mistakes, will do things which will end in some failures and disasters. Let something like Indian economy, in the sense of a global democracy, be already forgiven all its future disasters. So startup is also a very interesting idea of being new to the game. And in a way, playing the game in such a way कि जो हमसे जो गलतियाँ होंगी वो पहले से ही कुछ हद तक हमें उतनी माफ़ी दे दी जाए. At the same time, because we are one of the most populous democracies, we want a place in the seat of
sovereign power, UN and so on. So both are the same. So there's double logic. A is operating and they look contradictory, but actually they are not. They go very well against each other. And it seems to me that Marx, of course, said, because he addressed the workers, and workers in a particular 19th century context, when factually workers were in a situation of such alienation and impoverishment and misery in the system. In that sense, you can be reminded of the farmers, though it's not a very accurate analogy of Maharashtra. You could tell the workers you have nothing to lose but your chains. You have no stakes. Yeah. So rebel. So break it. In today's times, I think that the slogan has to be that much more sort of challenging and reaching ऐसी जगह जो और आपके अंदर ही है, आपका हिस्सा है, लेकिन आपसे भी छुपी है, और उसे कहीं हमें sort of सामने आना, वो ये है कि say no whether you have a stake or not, irrespective of that, say no. That's it. Thank you.